Hello everyone, very warm welcome to Unacademy, India's largest online education portal. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है and we are going to proceed in the today's session. And what you can see on your screen, China's nightmare, that is Turkestan Islamic Party. So China, which has been a nightmare to the whole globe since past couple of decades with regard to its expansion policies, its debt trap towards many underdeveloping and the developing nations. But nevertheless, things are not always the same. The one country who is threatening the globe with its expansionism, and apart from that, also going ahead with the mass killing, or we call it as the genocide of the Uyghur Muslims inside its state. The very same country is also troubled and frightened with a political and a militant group known as ETIM, East Turkestan Islamic Movement, as what you can see on your screens here, a critical security concern for China. Literally, biggest concern here for China, what we can call is the presence of ETIM, East Turkestan Islamic Movement, within Afghanistan. So the problem here is China wants to take control over the natural resources of Afghanistan, as the natural resources rich state can provide good boost to any country's economy. Any country's economy. And when we have seen in the year 2021, August 2021 specifically, when America officially withdrew its forces from the state of Afghanistan, immediately the first country was China that tried to have the cordial relations with the so-called government of Afghanistan known as Taliban, though not yet officially recognized. But yes, China wants Afghanistan at any cost. And the only roadblock to China and towards Afghanistan is this one particular group known as ETIM. So, what China views? China views ETIM as a separatist threat to the BRI projects in the South and Central Asia. So, with regard to the Belt and Road Initiative or the Silk Route 2.0, the biggest threat to China, where it can be seen as this blue army known as ETIM, right? So, what we can see, China's foreign ministry's April 2023 statement on Afghanistan urges decisive action against terrorism, including the ETIM. जिसे बोलते हैं ना, अपनी ही जो है मार खुद को पड़ना. तो दुनिया भर में आतंकवाद को सहारा देते हुए ये कुछ नेशंस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अब जब खुद ही इनको मार पड़ती है आतंकवाद की, तब इनको समझ में आता है कि क्या होता है कर्मा. राइट, ओके. सो पॉइंट इज, क्या प्रॉब्लम है, ETIM का जन्म क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज द ऑनस्लॉट गोइंग अगेंस्ट द उइघुर मुस्लिम्स इन चाइना. ओके, वो चाइना जो दुनिया भर में इंडिया को और बाकी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करता फिरता है कि आपके यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वही चाइना अपने स्टेट के अंदर क्या क्या करता है हम सब जानते हैं. और आप देख पा रहे हैं ये जो आपकी लोकेशन है ब्लू कलर के अंदर. सो हियर एज व्हाट यू कैन सी इज चाइना, right? And this is in the blue tippet, right? So on towards the west, okay, where you can see here, this is the state East Turkestan, right? Where the important city being the Urumqi. So here is East Turkestan, just above you can see Pakistan, just above Tibet, and here we have got the rest of the Western Asian nations, right? So this is where the strategic location of East Turkestan is present. And you can see it's one of the strategic locations for us as well if we want to counter the China's and Pakistan's relations with regard to the CPEC, right? So as what we can see to the next of the points, here we go. In 2013, okay, it was the time period of 2013 when China owned 79% of the foreign investments in Afghanistan. यानी कि एक तरीके से ना अफगानिस्तान ने खरीद ही रखा था चाइना ने अफगानिस्तान को खरीद ही रखा था अफगानिस्तान को. However, the pace of Chinese investment slowed afterwards as disagreements arose over the terms of Ainak copper mine. So guys, ये एक term है जो आपको आपके current affairs में मिल रहा है places in news के हिसाब से. So this is what the Ainak copper mines. Where is Ainak copper mine? It's available in the state of Afghanistan, right? Okay. So
This influx of Chinese entrepreneurs to Afghanistan was dubbed as gold rush. So another term in news, gold rush. What is gold rush? When Taliban officially became the government of China, Afghanistan, then many big businessmen and industrialists from China, they rushed to Afghanistan that let's now make a cordial deal and establish our own bases in Afghanistan where we can extract the natural and the mineral resources from the soil of Afghanistan. And this rush by the big industrialists and Afghan businessmen of China came to be known as gold rush. Okay, the statement, the term gold rush was given by Al Jazeera. Okay, so this is what we need to understand. So दो terms हैं यहाँ पर आपके पास न्यूज में, एक है आयनक कॉपर माइन, दूसरा है gold rush. Okay, so moving forward to the next one. In November 2022, specifically, China officially revived the Pine Nut Air Corridor. So जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ओके, सिंपली जिस तरीके से हमारे पास जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये तैयार कर रहे हैं दुनिया भर में, उसी के अंदर ओके इन्होंने पाइन नट एयर कॉरिडोर भी तैयार किया है अफगानिस्तान और चाइना के बीच. ओके, सो एक तीसरा टर्म आपके पास न्यूज में है, वो क्या आ गया है? पाइन नट एयर कॉरिडोर. किसने तैयार किया है? चाइना ने तैयार किया है. कहां तैयार किया है? अफगानिस्तान के अंदर तैयार किया. दैट रिजल्टेड टू एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट? ओवर 1000 टन्स टू चाइना, राइट? 1000 tons of products to China, specifically in the year 2022. China implemented zero tariffs on 98% of Afghan products. So you can see China has given very huge support to Afghanistan, right? So Afghan products restarting work from Ainak copper mine, which is present in Logar region of Afghanistan, and so on. Right, so this is where we can see Chinese intentions, how cruel their intentions are. They have nothing but only one perception, that is profit. Well, you can see China hasn't officially formally recognized the Taliban government. It has taken significant steps in that direction. They received the Taliban ambassador and allowed them to control Afghan embassy in Beijing, right? Okay, so this is they have also done, though not they have declared officially that we have accepted Taliban as the government of Afghanistan. ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनकी जो एम्बेसी है बीजिंग में अफगानिस्तान की, उसमें तालिबान का ही एक बंदा बैठा हुआ है एज एन एम्बेसडर, राइट? बट ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. सो ये से कहते हैं ना दोगलापन. ओके, द डुअल स्टैंडर्ड्स. सो फर्दर व्हाट यू कैन सी हियर, like China, Russia has allowed Taliban to manage Afghanistan's embassy in Moscow. So जो रशिया करेगा चाइना भी वही करेगा, जो चाइना करेगा रशिया भी वही करेगा ऑब्वियसली. लेकिन रशिया ने भी तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे रखे नहीं है, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अप्रैल 2023 के अंदर रशिया ने रीजनल कंसल्टेशन जो है फॉर पीस बुलाया था, जिसमें अफगानिस्तान से कोई नहीं था, जिसमें तालिबान से कोई नहीं था. और ये कंसल्टेशन फॉर पीस किसके लिए था? ये अफगानिस्तान के लिए ही था, लेकिन उसमें कोई भी तालिबानी मौजूद नहीं था, राइट? और यही सेम चीज जो है अमेरिका ने भी की है, यूरोपियन नेशंस ने भी की है. ना तो उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, ना ही उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि हम आपकी एम्बेसी में जो है आपके एम्बेसडर्स को बैठने देंगे. लेकिन दोगलापन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का देखने को मिलता है, जब उन्होंने लगभग 10 से 14 दिनों के अंदर within 10 to 14 days लगभग 80 मिलियन डॉलर्स के कैश शिपमेंट जो है भेजे हैं अफगानिस्तान रीजन के अंदर. तो या तो आप रिकॉग्नाइज मत करिए, टोटली बॉयकॉट करिए, टोटल मना करिए, ये अपने आप छोड़कर भाग जाएंगे, और या तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर कायदे से करिए, सो दैट उनका जो है प्रॉपर जो है ट्रेड चल पाए, जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं कम से कम उनकी जिंदगी चल पाए. तो इसे ही कहते हैं ना द डुअल स्टैंडर्ड थिंग्स. ओके, so guys, I hope this is what the agenda for the day, it is all clear. Okay, so thank you so much for joining me guys, and before ending the session, please remember the July optional carnival is on. PSIR, geography, sociology, history, public administration, maths, anthropology and agriculture. The best educators for all of these subjects, they are available on the Unacademy Plus. And apart from that, Madhukar Kotwe sir has come up with his own batch of CSAT, right? So what you have to do, you have to join it. Just you need a promo code
And what's the promo code? It's written here. PMIAS will be your promo code for any kind of purchase of any kind of the Unacademy Plus subscription. राइट सो गाइज प्लीज रिमेंबर आपके लिए विजेता बैच भी जो है हम लेकर आए हैं जो कि 8 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है राइट सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप इससे कोड क्या रहेगा ज्वाइन करने के लिए सेम कोड रहेगा ओके व्हाइल यू आर परचेजिंग द कोर्स रिमेंबर यू हैव टू अप्लाई अ प्रोमो कोड एंड दिस विल बी द प्रोमो कोड गाइज दैट इज द PMIAS ओके एवरीवन सो प्लीज रिमेंबर प्रतीक नायक सर हैं वहां पे मधुकर कोटवे सर हैं मृणाल पटेल सर हैं सुदर्शन गुर्जर सर हैं और सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सीसैट हिस्ट्री ये सब आपको इन बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने के लिए मिलेगा ओके सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट fee what it is something 29,999 that is 30,000 rupees okay but this can be reduced by 10% that is it could go through up to something rupees 27,000 rupees if you apply the promo code that is PMIAS okay everyone so that's it from my side today see you all soon in the very next session bye bye take care jai Hind.